Shivam, Namaste friends. My name is Sahil and I am from Maruti Suzuki Authorized Dealership, Shivam AutoZone, Mumbai. Today we are going to talk about HUD aka Heads Up Display as the latest technology features launched in Maruti Suzuki cars such as Nexa Baleno, Nexa Fronx, Grand Vitara and Maruti Suzuki Brezza. Usually HUD is seen in modern aircrafts and high-end cars. However, as usual, Maruti Suzuki has launched the first in segment HUD as a safety and latest technology feature in its cars. HUD is a reflection based system that uses a digital display showing various information on a specifically designed glass screen. Head-up display is a transparent screen that opens up in front of you in your line of sight, providing displaying information. The transparent display keeps the visibility of the driver intact. HUD provides driving information such as speed, RPM, AC functions, fuel economy, and warning notification with multi-display options. Moreover, you can also adjust brightness and view modes of the head-up display. Furthermore, you can adjust the angle of HUD as per your convenience and seat position. So guys, let's talk about the multi-display option. इसमें आपको 3 व्यू दिए जाते हैं जो आप आपके ड्राइविंग के कन्वीनियंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो with just a click of one button, which is the HUD. Yes guys, आप देख सकते हो जब भी मैं HUD का बटन प्रेस करता हूँ इसका मोड चेंज हो जाता है. It is that simple. So guys, now let's talk about the brightness and positioning of the HUD. So guys, अगर आप दिन के टाइम पे चला रहे हो तो आपको इसे ज़्यादा brightness पे रख के चलाना पड़ेगा, और if you are driving in the night you have to low down the brightness. So guys, अब ये होगा कैसे? So guys, you can see आपके ड्राइविंग साइड के राइट हैंड साइड पे आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं just beside the button of HUD. This is the button for the brightness. If I press it तो इसके brightness का ऑप्शन मुझे दिखाई देता है. So after that, just pressing the button, you can adjust the brightness according to your convenience. These are 2 buttons from which you can adjust them. So guys, talking about the positioning of the HUD, अगर आप height में ज़्यादा लंबे हो या फिर short हो, आप आपके convenience के हिसाब से इसको adjust कर सकते हो. So guys, this is really simple to adjust. आपको just ये 2 buttons press करने हैं, this and this. तो जब भी मैं इसको प्रेस करता हूँ ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है. सो इट्स अप टू यू, आपकी हाइट के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो और आपकी ड्राइविंग का मजा उठा सकते हो. सो गाइस, एयर कंडीशन के बारे में बात करें, सो इफ आई एम ड्राइविंग एंड आई हैव टू एडजस्ट द एसी टेम्परेचर, आई हैव टू लुक ऑल द वे डाउन टू एडजस्ट इट. अब देख सकते हो मुझे अपना ड्राइविंग से ध्यान हटा के नीचे देख के एडजस्ट करना पड़ता है, बट बिकॉज ऑफ द HUD आई डोंट हैव टू डू सो. अब देख सकते हो जब भी मैं टेम्परेचर कम करता हूँ या बढ़ाता हूँ मुझे डायरेक्टली HUD में दिख जाता है. इवन इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग इट, मुझे तुरंत इसमें दिख जाता है. और अगर आपको सवाल है कि इसमें तुरंत दिखता है या लेट, तो इसमें बता दो आपको इट कम्स विद 0 लेटेंसी. तो गाइज, इसमें और एक बात यह है कि अगर आपके गाड़ी का फ्यूल लो है तो ये आपके HUD में भी दिखाया जाता है. अभी मेरे गाड़ी का फ्यूल अच्छा खासा है तो मुझे ये नहीं दिख रहा है, बट इन केस आपके गाड़ी का फ्यूल लो है तो आप जब भी कार में बैठोगे आपको तुरंत वार्निंग आ जाएगा कि योर फ्यूल इज लो. सो गाइज, बात करें अगर इसके वार्निंग अलर्ट्स की, तो जब भी मैं डोर ओपन करता हूँ मुझे HUD में तुरंत नजर आ जाता है कि मेरा दरवाजा खुला है. अभी जैसे मैंने मेरे लेफ्ट हैंड साइड का पिछला दरवाजा ओपन किया है तो इसमें भी आप देख सकते हो कि ये मुझे तुरंत इसने दिखाया. ये काफी कमाल का फीचर है गाइस. लाइक यू डोंट हैव टू लुक डाउन हियर that your door is open, or you can directly look into your HUD and see whether what functions are going on. The feel of driving a car becomes more intuitive and instinctive with the new head-up display. Gently rising in front, HUD gives a thrill to our senses, giving a tech-savvy and feel-good vibe driving. So guys, this was all about the HUD head-up display.
Stay tuned for the next video, which is going to be on SmartPlay Pro Plus, which we are soon going to launch on our social media and YouTube channel. If you liked our video, don't forget to comment, share and subscribe our YouTube channel, and stay tuned to more such exciting videos. See you there.